हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेबी ब्लॉग्स। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो फर्स्ट जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। ओके, सो कोशिश करेंगे तो उसे ख़त्म करने का। तो टोटली इसमें हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिटन बाय अपूर्वा एस शास्त्री एंड संध्या भट्ट, ठीक है। तो इसका चैप्टर 1 ख़त्म करेंगे। चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री है। चैप्टर 2 में आपका माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में टोटली मैं देख रहा हूँ, टोटली एक पेज 2.5 पेज है, ठीक है। सो ज़्यादा इतना मतलब वो बड़ा चैप्टर नहीं, तो इसे कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, हमारा चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, HIST हिस्टोरी, HIST हिस्टोरी, ठीक है। सो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी को समझने से पहले हमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मतलब पता होना चाहिए। सो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन that deals with the study of a microorganism such as bacteria, viruses, parasite, fungi which produce disease in human called as infectious disease, ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन का एक ब्रांच है। इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन that that deals that deals with the study of a microorganism, the study of a microorganism। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है? माइक्रोऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है। उसके बाद वायरसेस, वायरसेस, ठीक है। पैरासाइट, पैरासाइट एंड और फंजाई, ठीक है, पैरासाइट और फंजाई। सो दीज आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म which produce disease in human, which produce which produce which produce disease, which produce disease in human। ये क्या करते हैं? ह्यूमन में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। एंड ह्यूमन में डिजीज प्रोड्यूस जो करते हैं, उस डिजीज को क्या बोला जाता है? उस डिजीज को बोला जाता है इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। सो हमने समझ लिया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ अ मेडिसिन that deals with the study of a microorganism such as bacteria, viruses, parasite or fungi which produce disease in human called as infectious disease। नाउ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? एक होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा होता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब ये बड़ा टर्म को डिनोट करेगा। इज ए ब्रांच ऑफ
is a branch of medical science, is a branch of medical science। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ये किसका ब्रांच है? मेडिसिन का ब्रांच है। लेकिन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो मेडिकल साइंस का ब्रांच है। concerned with concerned with the prevention, concerned with the prevention, उसके बाद डायग्नोसिस and treatment of infectious disease, and treatment of infectious disease। The various branches of clinical microbiology include, the various branches of clinical microbiology include, the various branches of clinical microbiology include, क्या क्या इंक्लूड करेगा? The various branches of clinical microbiology include general microbiology, पहला होता है आपका general microbiology, general microbiology। Now general microbiology क्या होता है? It deals with the study of general properties of the microorganism। It deals with ये किसके साथ डील करता है? it deals with the study, it deals with the study of general properties, it deals with the general properties of microorganism, it deals with the general properties of the microorganism। now microorganism का general property क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो जनरल प्रॉपर्टी होता है उसमें आपका टैक्सोनॉमी आएगा, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और क्या क्या आएगा? पैथोजेनेसिस, मतलब डिजीज कैसे फंक्शन होता है, पैथो मतलब डिजीज, जेनेसिस मतलब ये कैसे होता है, फंक्शन ऑफ द डिजीज। ठीक है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस मतलब परीक्षा निरीक्षा जो लैबोरेटरी में होता है। एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर इफेक्टिव किलिंग, एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर इफेक्टिव किलिंग, इसको बोला जाता है जनरल माइक्रोबायोलॉजी। सो जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ना माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो जनरल प्रॉपर्टी है वो क्या है? टैक्सोनॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, लैबोरेटरी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट फॉर देयर इफेक्टिव किलिंग। नाउ कमिंग टू द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्यूनो सिस्टम। जहां पर लॉजी वर्ड आ गया मतलब इसका मतलब होता है लोगस, लोगस मतलब स्टडी। ठीक है। सो इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम।
it it deals with with the study it deals with the study it deals with the study of the immune system. So immunology क्या होता है? It deals with the study of a immune system. Immunological mechanism of infectious disease. Immunological mechanism of infectious disease. Immunological mechanism of infectious disease and various immunological method and various immunological method for diagnosis for diagnosis of infectious disease. So immunology क्या होता है? It deals with the study of a immune system, immunological mechanism of a infectious disease का immunological mechanism क्या होता है उसके ऊपर, and various immunological method for diagnosis of a infectious disease, मतलब इसके परीक्षा निरीक्षा के लिए कौन सा immunological method यूज होता है. ठीक है. नाउ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, ये भी हमारा क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है. हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल. It deals with the study of various control measure to prevent the transmission of healthcare associated infection. It deals with the study of various control measure to prevent the transmission of healthcare associated infection. Hospital infection control. It deals with the study of various control measure to prevent the transmission of healthcare associated infection. ना उसके बाद सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी जिसे बोला जाता है इन्फेक्टियस डिजीज. सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी इसे बोला जाता है इन्फेक्टियस
diseases. So microorganism infect various organ system of our body. Accordingly, the infectious disease are classified into various clinical syndromes. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इन्फेक्ट करता है वेरियस, बहुत सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है, वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर body. Accordingly, the infectious diseases are classified into various clinical syndrome. पहला, ब्लड स्ट्रीम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन. ब्लड स्ट्रीम एंड cardiovascular system infection. Second, gastrointestinal hepatobiliary system infection. Gastrointestinal and hepatobiliary system infection. Third, skin, soft tissue, musculoskeletal system infection. Skin, soft tissue and musculoskeletal system infection. Central nervous system infection. Central nervous system infection. Respiratory tract infection. Urinary tract infection. Genital tract infection. Infection of eye. Infection of eye, ear and others. Classification of a microorganism. Microorganisms are grouped under both prokaryotes and eukaryotes. Bacteria are placed under prokaryotes. They have a primitive nucleus
and other properties of a prokaryotic cell. Table 1.1. So characteristic of a prokaryotes and eukaryotes. नाउ कैरेक्टरिस्टिक अंडर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसियो माइक्रो प्रोकैरियोट्स में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में फंजाई पैरासाइट पाया जाता है न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में डिफ्यूज टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन बाइनरी फिशन होता है प्रोकैरियोट्स में बट यूकैरियोट्स में आपको माइटोसिस एंड मियोसिस देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में वन एंड सर्कुलर होता है यूकैरियोट्स में मेनी होता है एंड वो लीनियर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर पाया जाता है प्लाज्मिड के अंदर पाया जाता है वहीं यूकैरियोट्स में फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में डज नॉट कंटेन स्टेरॉल्स एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा बट यूकैरियोट्स में कंटेन स्टेरॉल्स सेलुलर ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा जो भी होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है बट राइबोसोम को छोड़ करके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है राइबोसोम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में 70S होता है वहीं यूकैरियोट्स में 80S होता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन आपका यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम में होता है यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एस का मतलब होता है सेप्डबर्ग यूनिट व्हेयरएज फंजाई एंड पैरासाइट मतलब प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थिस belongs to eukaryotes having a well defined nucleus and various eukaryotic cellular organelles. Viruses are neither considered as prokaryotes nor eukaryotes. वायरसेस जो होता है ना तो वो प्रोकैरियोट्स में जाएगा ना तो वो यूकैरियोट्स में जाएगा बिकॉज दे लैक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट द एबिलिटी टू रेप्लिकेट एबिलिटी को छोड़ करके उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता है हिस्ट्री The existence of a microorganism was hypothesized for many centuries before their actual discovery. The teaching of Mahavira Jainism 6th century BC and the postulation of Bharo and Columella who named the invisible organism Animalia Minuta were some of those attempts. The eminent personalities in the field of microbiology and their important contributions have been described below. Anthony Phillips van Leeuwenhoek, 1676. He was the first scientist who observed bacteria and other microorganisms using a single lens microscope constructed by him, and he named those small organisms as little animalu animalcules animalcules. Louis Pasteur
Louis Pasteur. Microbiology developed as a scientific discipline from the era of Louis Pasteur, that is 1822 से लेकर के 1895. He is also known as the father of microbiology. He was a professor of chemistry in France. His studies of fermentation led him to take interest to work in microbiology. His contribution to microbiology are as follows. He had proposed the principle of fermentation for preservation of food. He introduced the sterilization technique and developed steam sterilizer, hot air oven, and autoclave. He described the method of pasteurization of milk. इसने एंटोनी 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 बोल रहा हूँ, लुइस पास्चर, ठीक है, लुइस पास्चर. ही डिस्क्राइब्ड द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क. आज तमे जो मिल्क को फुटेकरी जहाँ करूच सेटा किए बाहर करथिले, लुइस पास्चर, ठीक अछि. He had also contributed for the vaccine development against several diseases such as anthrax, fall cholera, and rabies. He disproved the theory of spontaneous generation of a disease and postulated the germ theory of a disease. He stated that the disease cannot be caused by a bad air or vapor, but it is produced by the microorganism present in air. Liquid media concept. He used nutrient broth to grow microorganisms. He was the founder of the Pasteur Institute, Paris. Joseph Lister. Joseph Lister, 1867, is considered to be the father of antiseptic surgery. Father of antiseptic surgery. He had observed that the post-operative infection were greatly reduced by using disinfectant such as diluted carbolic acid during surgery to sterilize the instrument and to clean the wounds. Robert Koch. Robert Koch provided a remarkable contribution to the field of microbiology. He was a German general practitioner 1843 से लेकर के 1910. Figure 1.1c. Okay. Robert Koch. Robert Koch. Figure 1.1c. Robert Koch. बढ़िया. He introduced solid media for the culture of bacteria. Elsimius Hisi, the wife of one of the Koch assistant, Elsimius Hisi, the wife of one of the Koch's assistant, had suggested the use of agar as a solidifying agent. He also introduced the method for isolation of bacteria in pure culture. He described hanging drop method for testing motility. He discovered bacteria such as anthrax bacilli, tubercle bacilli, cholera bacilli. He introduced staining technique by using aniline dye. Koch postulates. Robert Koch had postulated that a microorganism can be accepted
as a causative agent of an infectious disease only if four criteria are fulfilled. These criteria are as follows. The microorganism should be constantly associated with the lesion of the disease. It should be possible to isolate the organism in pure culture from the lesion of the disease. The same disease must result when the isolated microorganism is inoculated into a suitable laboratory animal. It should be possible to re-isolate the organism in pure culture from the lesion produced in the experimental animal. An additional fifth criterion was introduced subsequently, which states that antibody to the causative organism should be demonstrable in the patient's serum. Exception to Koch's postulate: it is observed that it is not always possible to apply these postulates to study all the human infectious disease. There are some bacteria that do not satisfy one or more of the four criteria of Koch's postulate. Those organisms are Mycobacterium leprae, Treponema pallidum. They cannot be grown in vitro, however, they can be maintained in experimental animal. Neisseria gonorrhea. There is no animal model, however, it can be grown in vitro. Other important contribution: Paul Ehrlich 1854 से लेकर के 1915. He is known as the father of chemotherapy. Paul Ehrlich. He was also the first to report the acid-fast nature of the tubercle bacillus. He was the founder and first director of what is known now as the Paul Ehrlich Institute, Germany. Edward Jenner, 1796. Edward Jenner. 1796. He developed the first vaccine of the world, the smallpox vaccine. Edward Jenner. He used the cowpox virus variole vaccine to immunize children against smallpox, from which the term vaccine has been derived. The same principle are even used today for developing vaccine. Ignaz Semmelweis, Semmelweis, 1846. He introduced the importance of hand hygiene in healthcare facilities. He proposed that the improper hand hygiene practice during delivery led to the transmission of infection, causing outbreak of puerperal fever. Puerperal fever. Puerperal fever. Hans Christian Gram, 1884. He developed a method of staining bacteria which was named as Gram stain to make them more visible and differentiable under a microscope. Ernst Ruska, 1931. He was the founder of electron microscope. Ernst Ruska. Alexander Fleming, in 1929. He discovered the most commonly used antibiotic substance of the last century, that is penicillin. Barbara
मैकक्लिंटक, बारबरा मैकक्लिंटक. She described the mobile genetic element in bacteria called transposons. Now, so discovery of a important microorganism. Discovery of an important microorganism. ऑक्सटन, ऑक्सटन ये होता है डिस्कवरर. कौन सा इन्होंने डिस्कवर किया था? स्टाफाइलोकोकस ऑरियस. ऑक्सटन. निसर, निजर, निजर, निजर ने क्या किया था? निसरिया गोनेरिया. लोफेलर, लोफेलर, लोफेलर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये. ब्रूस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस, मेलिटेंसिस. हांसेन, माइकोबैक्टीरियम लेप्राe. स्काउडिनिंग एंड हॉफमैन, स्काउडिन एंड हॉफमैन. ट्रिपोनिमा पालिडम. डी हेरेल बैक्टीरियोफेजेस. WH वेल्च. क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस. एंथोनी एप्स्टीन एंड योनीबार एप्स्टीन बार वायरस. ओके. बैक्टीरिया नेम आफ्टर द डिस्कवरर. कॉमन नेम क्लेव लोफेलर बैसिलस. साइंटिस्ट नेम हो गया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये. बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर डिस्कवरर. कॉमन नेम हो गया क्लेव लोफेलर बैसिलस. इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये. पिफर बैसिलस, पिफर बैसिलस. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. व्हाइटमोर बैसिलस. बुरखोल्डेरिया, बुरखोल्डेरिया स्यूडोमाली. इटॉन्स एजेंट माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया. गाफ्की एबर्थ बैसिलस. साल्मोनेला टाइफी. Walter Gilbert and Frederick Sanger were the first to develop 1977 the method of DNA sequencing. So DNA sequencing method developed by whom? Walter Gilbert and Frederick Sanger. Carrie B. Mullis discovered polymerase chain reaction PCR and was awarded Nobel Prize in 1993. Discovery of a microorganism. Several microorganisms were discovered by the scientist. Table 1.2. Okay, ये हमने पढ़ लिया. The name of some bacteria have been coined in the honor of scientists who discovered them. Table 1.3. Correct. Nobel laureates. Laureates. A number of scientists in medicine and physiology have been awarded Nobel Prize for their contribution in microbiology. Table 1.4. Nobel laureates in medicine or physiology for their contribution in microbiology. Nobel laureates. Sir Ronald Ross. ईयर हो गया 1902.
रिसर्च इन्होंने क्या किया था, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन मॉस्किटो, रॉबर्ट कोच 1905, डिस्कवरी ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। चार्लेस एल ए लाभेरान 1907, discovery of a malaria parasite in on-stand preparation of blood. Sir Alexander Fleming 1945, discovery of penicillin. J. Liderberg and E. L. Tatum 1958, discovery of a conjugation in bacteria. Watson and Crick 1962, discovered double helix structure of DNA. Holle, Khurana and Nirenberg 1968, discovered genetic code. B.S. Bloomberg 1976, discovered Australia antigen HBsAg. Barbara McClintock 1983, discovered mobile genetic element transposons. George Kohler 1984, developed hybridoma technology for monoclonal antibodies. Carrie B. Mullis 1993, invented polymerase chain reaction. Stanley D. Pruginer 1997, described prions. Luke Montagner and Barry Sinosi 2008, discovery of human immunodeficiency virus. Luke Montagnier and Barry Sinosi 2008, discovered of a human immunodeficiency virus HIV. William C. Campbell and S. Omura 2015, for discovering ivermectin for the treatment of a roundworm infection. Yo 2015, for discovering artemisinin, a novel drug used for मलेरिया। ठीक है, तो हमने यहाँ चैप्टर 1 को ख़त्म कर दिया। अब चैप्टर 2 में माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे कितना बड़ा चैप्टर। अच्छा, ये भी लगभग 1 पेज हो जाएगा, ये लगभग 2 पेज का है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम माइक्रोस्कोपी के ऊपर पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी, जाहिर सी बात है, माइक्रोस्कोपी में जो चीज़ आप देखोगे वो अपने खोले आंखों में आप नहीं देख सकते हो। इसका सिंपल फंडामेंटल ये है। Microscopy. Microorganisms are extremely small. The size of a bacteria, fungi, parasite is expressed in
माइक्रोमीटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये इतना स्मॉल है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ये जितने भी हैं, ठीक है, इनका एक साइज होता है। इनके साइज को मेजरमेंट करने के लिए एक माइक्रोमीटर टर्म यूज होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर। सो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, इनका साइज को एक्सप्रेस करने के लिए माइक्रोमीटर टर्म यूज होता है। नाउ 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, whereas viruses are measured in नानोमीटर। ये माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, ये तीन को मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर वर्ड यूज होता है, जबकि वायरसेस को मेजर करने के लिए नानोमीटर होता है। माइक्रो थोड़ा बड़ा होता है, नानो थोड़ा छोटा होता है। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर। उल्टा हो जाएगा गणित। बैक्टीरिया, so most of the bacteria of a medical importance generally measures 0.2 से लेकर के 1.5, या तो 0.2 रहेगा या फिर 1.5 माइक्रोमीटर रहेगा इन डायमीटर, एंड अबाउट 3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वायरसेस का कहानी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन पैथोजेनिक वायरसेस रेंज आर 20 से लेकर के 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। ना पैरासाइट, they greatly vary in size. Protozoans measure in micrometer. Helminthes ranges from few millimeter to several meter. Fungi, most fungi grow as hyphae which are cylindrical thread-like structure 2 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर and up to several centimeter in length. Some fungi grow as yeast, round to oval, unicellular, budding cell of 4 to 8 micrometer in size. Some parasites such as adult form of helminthes are visible to the naked eye, whereas the rest of the microorganism, due to their small size, cannot be seen distinctly with the unaided eye, but need a microscope for their visualization. Most bacteria, parasite, fungi can be observed by light microscope, whereas virus need an electron microscope. Therefore, it is important to understand the principle and the functioning of each microscope. Microscopy refers to the use of a specialized instrument called as microscope to view objects and area of objects that cannot be seen with the naked eye. Objects that are not within the resolution range of a normal eye. There are various types of a microscope that are used in diagnostic microbiology. Bright field or light microscope, dark field or dark ground microscope, phase contrast microscope, fluorescence microscope, electron microscope. Now, properties of the microscope. A good microscope should have at least 3 properties. Good resolution. Resolution or resolving power refers to the ability to produce separate image
of a closely placed object so that they can be distinguished as two separate entities. The resolution power of an unaided human eye is about 0.2 millimeter, मतलब 200 micrometer. Light microscope is about 0.2 micrometer. Electron microscope is about 0.5 nanometer. Resolution depend on refractive index of the medium. Oil has higher refractive index than air, hence use of oil enhances the resolution power of a microscope. Good contrast. This can further be improved by staining the specimen. When the stains bind to the cell, the contrast is increased. Good magnification. This is achieved by the use of convex lenses, bright field or light microscope. The bright field or light microscope forms a dark image against a brighter background, hence the name as bright field. Structure. The parts of a bright field microscope are divided into three groups. Mechanical parts, magnifying parts, illuminating parts. Illuminating parts. The parts of a bright field microscope are divided into three groups. Mechanical part, magnifying part, illuminating part. Now, मैकेनिकल पार्ट इसका एक होता है बेस ओके सो इट होल्ड्स वेरियस पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप सच एज लाइट सोर्स द फाइन एंड कोरेज एडजस्टमेंट नॉब लाइट सोर्स को ये धरता है ओके लाइट सोर्स कहाँ पर है लाइट सोर्स हाँ लाइट सोर्स नीचे रहेगा उसके बाद फाइन फाइन क्या है ओके ये होता है फाइन एडजस्टमेंट ओके कोरेज एडजस्टमेंट नाम अच्छा ये नाम है सी शेप्ड आर्म इट होल्ड्स द माइक्रोस्कोप एंड इट कनेक्ट द ocular लेंस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस सी शेप गोटे आर्म रही ये हूँ सी शेप आर्म ये सी शेप आर्म रे कौन रोची इट होल्ड्स द माइक्रोस्कोप ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप को होल्ड करिछि एंड इट कनेक्ट द ocular लेंस कहाँ पर है ओके इट होल्ड्स द ocular लेंस समझ में आ रहा है ऊपर में ocular लेंस आपका आ जाएगा आखिर एटा को देखियो टू द ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर है अच्छा ये बाड़ी वालिया चलो मैकेनिकल स्टेज द आर्म मैकेनिकल स्टेज कहाँ पर है किधर आपका मैकेनिकल है बाबू मैकेनिकल के बारे में तुम कुछ बताया नहीं अच्छा स्टेज लिखा है मैकेनिकल नहीं मतलब सीता माई की अंडर नहीं लिखा है मैकेनिकल स्टेज मेकानिकल स्टेज एटे स्टेज भितर गुटे आउची एक प्लेट एटा जोटे सला ए स्लाइड रा भरिबो अच्छा द आर्म बियर्स ए स्टेज विथ स्टेज क्लिप हाँ स्टेज क्लिप एरा जଣା पड़ुची हाउ स्टेज क्लिप हाँ
to hold the slide and the stage control ଗୋଟେ knob କୋଉଟେ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ଆରେ ଶଳା stage control knob କଣ? କିରେ ଶଳା ଏଟା କୋଉଠି ରହିଲା? The stage control knob to move the slide during viewing. The stage control knob. କୁଆଡ଼େ ତମର ଷ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନବ ରହିଲା? ଶଳା କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିବନି ଜଣେ ବୁଝିବ କେମିତି? ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନବ ଟୁ ମୁଭ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭିଉଇଂ। ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନବ ମାନେ ତ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଶଳା it has an aperture at the center that permits light to reach the object from the bottom. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଟ୍ ସୋର୍ସ। ଓକେ, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଉପର ଆଡ଼େ ତମେ ଦେଖିବ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଆପରେଚର୍ at the center that permits light to reach the object from the bottom. तो मेकानिकल पार्ट रे हमर एरा रहउची बेस रहीगला, तापरे सी शेप आर्म रहीगला, तापरे मेकानिकल स्टेज रहीगला। मेकानिकल स्टेज ये रहीगला। मेकानिकल स्टेज रे तमरो स्लाइड सब रहउची। इट द आर्म बियर्स ए स्टेज, इसके पास एक स्टेज होता है एंड स्टेज क्लिप होता है टू होल्ड द स्लाइड एंड स्टेज कंट्रोल नॉब होता है। स्टेज कंट्रोल नॉब स्टेज कंट्रोल नॉब हो छाड़। मैग्नीफाइंग पार्ट ocular lens. The arm contain an eyepiece. आर्म किधर है? ओके, सी शेप आर्म विषय कथा कहूँ। मैग्नीफाइंग पार्ट द आर्म कंटेन an eyepiece, ठीक अच्छे, दैट बियर्स एन ऑकुलर लेंस, जिसके पास ऑकुलर लेंस होता है, ऑफ 10x मैग्निफिकेशन पावर, पूरा जूम करिव 10x। माइक्रोस्कोप्स विथ 2 eyepiece आर कॉल्ड एज बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जिसके पास 2 eyepiece होता है उसे बोला जाता है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। बिनओकुलर माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। ऑकुलर लेंस हैज ए मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 10x। उसके बाद ऑकुलर लेंस तो ये हमारा हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो गया? और दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, द आर्म ऑल्सो कंटेन a revolving nose piece that bears 3 to 4 objectives with lenses of differing magnifying power 4x, 10x, 40x, 100x. The total magnification of a field is the product of the magnification of the objective lens and ocular lens. The total magnification of a field is the product of the magnification of a objective lens and ocular lens. तो स्कैनिंग फील्ड रे 40x, लो पावर फील्ड रे 100x, हाई पावर फील्ड रे 400x, ऑयल इमर्सन फील्ड रे 1000
X. Illuminating parts. कंडेंसर. कंडेंसर को कहाँ पर है? अच्छा, ये स्टेज है तले जो आइरिस डायफ्राग्राम अच्छी ता तले रहउची कंडेंसर. ठीक अछि, कंडेंसर. ओके, it is mounted beneath the stage which focuses a cone of light on the slide. Iris diaphragm. It controls the light that passes through the light that passes through the condenser. चलेगा. आइरिस डायफ्राग्राम हो गया. लाइट सोर्स. इट मे बी ए मिरर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब. इट मे बी ए मिरर, ये एक मिरर भी हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है. फाइन एंड कोरेज एडजस्टमेंट नॉब. फाइन एंड कोरेज एडजस्टमेंट नॉब. So they sharpen the image. Fine and coarse adjustment knob. So ये होता है coarse adjustment knob, ये होता है fine adjustment. ठीक है. Fine and coarse adjustment knob, they sharpen the image. Now इसका working principle क्या होता है? Working principle. The ray emitted from the light source pass through the iris diaphragm and fall on the specimen. The light rays passing through the specimen are gathered by the objective and a magnified image is formed. This image is further magnified by the ocular lens to produce the final magnified virtual image. Figure 2.2. ठीक अछि. आईरे तमरा देखुछ, एटे रहिला ocular lens, एठे रहिला तमरा objective lens. These are objective. Both reflected and unreflected light pass through the objective. So एठे होछि कोन रिफ्लेक्टेड गुरे रहउछि आ गुडे गुडे पे हमर कोन होछि. अच्छा, unreflected light pass through the objective. Now ये होता है हमारा स्पेसिमेन जो हमने यहाँ पर रखा है. ये होता है हमारा कंडेंसर. लाइट पास करके जीवो का भीतर दे. दिस इज द लाइट सोर्स. ये हमारे लिए लाइट सोर्स हो गया. दिस इज द कंडेंसर. चलेगा. ब्राइट फील्ड रे ये हुए डार्क. ये जोटा में पढ़ुछ एटा ब्राइट फील्ड. आई ocular lens, objective lens, only light reflected by the specimen is captured by the objective lens. ये होता है objective lens. इधर ocular lens, only light reflected by the specimen. ये होता है specimen is captured by the objective lens. बट ब्राइट फील्ड में क्या होता है, स्पेसिमेन के द्वारा बोथ रिफ्लेक्टेड एंड अनरिफ्लेक्टेड लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव. बट इसमें क्या होगा, ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन
is captured by the objective lens. और ऑन रिफ्लेक्टेड जो लाइट रहेगा वो बाहर जाएगा। सो इसमें ओपाक डिस्क यूज होता है। एठे लाइट आमर पका हला, इसमें कंडेंसर होता है, इसमें ओपाक डिस्क होता है डार्क फील्ड। एंड ये होता है डार्क फील्ड का कंडेंसर, ये होता है आपका एनुलर हॉलो एरिया। दिस इज द ओपाक डिस्क। ओके, चलेगा। भगवान, प्रभु। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल। इन डार्क फील्ड मतलब डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट appears bright against a dark background. This is made possible by use of a special dark field condenser, डार्क फील्ड कंडेंसर, जो कि फिगर 2.2 में दिया गया है। The dark field condenser has a central opaque area। डार्क फील्ड कंडेंसर के पास एक सेंट्रल ओपाक एरिया होता है दैट ब्लॉक्स लाइट, जो क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक करेगा फ्रॉम एंटरिंग द ऑब्जेक्ट लेंस directly, and a peripheral annular hollow area which allows the light to pass through and focus on the specimen obliquely. Only the light which is reflected by the specimen, only the light which is reflected by the specimen enters the objective lens, whereas the unreflected light does not enter the object. As a result, the specimen is brightly illuminated, but the background appears dark. Application: dark field microscope is used to study living unstained cell and thin bacteria like spirochetes, which cannot be visualized by light microscopy. Phase contrast microscope, phase contrast microscope। Phase contrast microscope. As per its name, in phase contrast microscope, the contrast is enhanced. This microscope visualizes the unstained living cell by creating difference in contrast between the cell and water. It converts slight differences in refractive index
and cell density into easily detectable variation in light intensity principle. The condenser is similar to that of dark field microscope, consists of an opaque central area with a thin transparent ring which produces a hollow cone of light. Okay. As the light ray passes through a cell, gets retarded by about one fourth of a wavelength due to variation in density and refractive index within the specimen. The undeviated light rays strike a phase ring in the phase plate, a special optical disc located in the objective, while the deviated rays miss the ring and pass through the rest of the plate. The phase ring is constructed in such a way that the undeviated light passing through it is advanced by one fourth of a wavelength. The deviated and undeviated waves will be about half wavelength out of the phase and will cancel each other when they come together to form an image. The background formed by undeviated light is bright while the unstained object appears dark and well defined. Figure 2.3 2.3b। इसे हम बाद में देखेंगे। Application: phase contrast microscopy is especially useful for studying microbial motility, determining the shape of living cell, and detecting microbial internal cellular components such as the cell membrane, nuclei, endospores, and inclusion bodies, which becomes clearly visible because they have refractive indices markedly different from that of the water. Fluorescence microscope. The fluorescence microscope refers to any microscope that uses fluorescence property to generate an image. Principle: when fluorescent dyes are exposed to ultraviolet rays, they become excited and are said to fluoresce. That is, they convert these invisible short wavelength rays into light of longer wavelength, that is, visible lights. The source of light may be a mercury lamp which emit rays that pass through an excitation filter. The excitation filter is so designed that it allows only short wavelength UV light about 400 nanometer, called as the exciting wavelength of light, to pass through, blocking all other long wavelength range. The exciting rays then get reflected by a dichromatic mirror in such a way that they fall on the specimen, which is previously stained by fluorescent dye and focused under the microscope. The fluorescent dye absorbs
the exciting range of a short wavelength gets activated and in turn emit rays of higher wavelength. A barrier filter positioned after the objective lens remove any remaining ultraviolet light which could otherwise damage the viewer's eyes. Blue or violet light which would reduce the image contrast. Application: Epifluorescence microscope. It is a simplest form of a fluorescence microscope which has the following application. Autofluorescence. Certain microbes directly fluoresce when placed under a UV lamp. Example: Cyclospora, a protozoan parasite. Microbes coated with fluorescent dye. Certain microbes fluoresce when they are stained non-specifically by fluorochrome dyes. Acridine orange dye is used for the detection of a parasite such as Plasmodium and filarial nematodes by a method called as quantitative Buffy-Coat (QBC) examination. Accuramine phenol is used for the detection of a tubercle bacilli. Immunofluorescence. It uses fluorescent dye tagged immunoglobulin to detect cell surface antigen and antibodies bound to cell surface antigen. There are two types: direct and indirect immunofluorescence test described in detail in chapter number 12. Electron microscope.
Electron microscope. An electron microscope uses accelerated electron as a source of illumination because the wavelength of electron can be up to 1 lakh times shorter than that of a visible light photon. The electron microscope has a much better resolving power than a light microscope. Hence, it can reveal the detail of a flagella, fimbriae, and intracellular structure of a cell. It was invented by a German physicist Ernst Ruska in 1931. Differences between light microscope and electron microscope are listed in table 2.1. Electron microscope are of two type: ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको बोला जाता है TEM, मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है। फिगर 2.6 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पार्ट्स। ओके ओके ठीक है। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप specimen preparation. The specimen to be viewed under electron microscope should be able to maintain its structure when it is bombarded with electron.
Hence only very thin specimen 20 से लेकर के 100 नैनोमीटर थिकनेस are suitable for electron microscope. However, bacterial cell are thicker than this. Hence, they need to be sliced into thin layer. To prepare the thin specimen, the following steps are needed. Fixation. Cells are fixed, killed, and structure preserved by using glutaraldehyde or osmium tetroxide for stabilization. Dehydration. Specimen is then dehydrated with organic solvent. एग्जाम्पल हो गया एसीटन और इथानॉल. Embedding. Specimen is embedded in plastic polymer and then is hardened to form a solid block. Most plastic polymer are water insoluble. Hence, complete dehydration of a specimen is must before embedding. Slicing. Specimen is then cut into thin slices by an ultra microtomy knife. Such thin slices of the specimen are mounted on a metallic slide मतलब copper. Electron pathway. Electrons are generated by electron gun which travel in high speed. The electrons are then made to travel in a path of vacuum to avoid deflection by collision with air molecules. Electrons pass through a magnetic condenser and then bombarded on the thin sliced specimen mounted on the copper slide. The specimen scatters electrons passing through it, and then electron beam is focused by magnetic lenses मतलब objective lens followed by a projector lens to form an enlarged visible image of the specimen on a fluorescent skin. Figure 2.7. Okay, ठीक है. A denser region in the specimen scatters more electron and therefore appears darker in the image since fewer electrons strike that area of the screen. In contrast, electron transparent region are brighter. Application and modification of a electron microscope. अच्छा, ये अभी भी बहुत बड़ा है. नहीं नहीं नहीं, अभी ये खत्म हो जाएगा. अच्छा, virus detection. Most important use of electron microscope in diagnostic microbiology is detection of a virus. It can detect a virus either directly from the clinical specimen. Example, rotavirus from stool में rotavirus पाया जाता है, और from tissue culture. तीसरा, after adding specific antiviral antibody to the specimen known as immuno-EM. The contrast of a electron microscope can be increased by several methods such as negative staining with heavy metal जैसे कि आपका टंगस्टिक एसिड और यूरानिल एसीटेट. दूसरा होता है बाई
shadowing, freeze etching technique is an alternative method for specimen preparation which helps to disclose the shape of organelles within the microorganism. Now, scanning electron microscope. Scanning electron microscope has been used to examine the surface of a microorganism in great detail. It has a resolution of 7 nanometer or less. The scanning electron microscope differs from transmission electron microscope in producing an image from the electron emitted by an object's surface rather than from transmitted electron. नाउ चैप्टर नंबर 3.1 में हम डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे जनरल बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी के ऊपर। इसका चैप्टर नंबर ऐसा 3 नहीं, चैप्टर नंबर 3.1 आएगा, फिर 3.2 आएगा। बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है, 1-2 पेज का है। क्योंकि ये जो होता है एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिवाइज्ड रीप्रिंट 4th एडिशन एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन करिकुलम। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बैक्टीरियोलॉजी। अगले चैप्टर नंबर 3.1 में जनरल बैक्टीरियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे। सो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग्स के लिए इतना ही। ये एक बुक रीडिंग सेशन भी था, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले बुक रीडिंग सेशन में एंड स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।